with moving axis. So we have a rod, और ये rod freely रखा हुआ है horizontal surface पे. Let's say this is kept on a horizontal surface, and a ball comes and hit it. उसे hit करता है. So in such situation, we can apply three equations, or one of the three equations, or two of the three equations. One is conservation of linear momentum, जो पहले fixed वाले में नहीं apply कर सकते थे, वो अब इधर की तरफ apply कर सकते हैं. Then we can also apply conservation of angular momentum. हम conservation of angular momentum भी apply कर सकते थे, पहले भी apply कर रहे थे. And the third one is Newton's law of collision. ये definitely ये भी apply कर सकते हैं. Got it, Gurashish? Yes, sir. Fine. So you just need to, कभी भी collision आएगा rotational motion में, you need to think about these three equations. इसके अलावा और किसी equation के बारे में आपको सोचना नहीं है. So let's take a question. You will try to solve this question. So suppose there is a rod lying on a horizontal surface. The rod mass is m, the length is L. And say there is a particle that is, let's say, small m. Or हाँ ठीक है, small m रखते हैं. ठीक है, this is capital M and small m. Be careful. Now this is moving with velocity v naught. This strikes the surface. इसे strike करता है, and this sticks to the rod. Fine. Sorry, ये stop. चलिए stick कर देंगे तो e आप तुरंत 0 ले लेंगे. After collision, let's say the ball stops after. टकराने के बाद ball रुक जाता है. Yes. ठीक है, तो आपको पता करना है find omega of rod, E of collision. So I can apply conservation of linear momentum. So according to conservation of linear momentum, like यहाँ पे यदि मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ, जैसे like before collision, just to make things clear, this is before collision, just before collision. During collision, इस पे एक I और इस पे एक I impulsive force लग रहा होगा. And just after collision, this will be moving with some velocity vc and it will be rotating like this. इस तरह से rotate कर रहा होगा. And the ball is stationary. The ball has stopped. So first वाले equation से initial momentum mv naught plus 0, initial angular momentum mv naught L by 2, velocity of approach v naught. इस वाले equation से final momentum is mvc, capital mvc for the rod plus 0. Yes. ठीक है, क्योंकि ओमेगा जो होगा वो तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनल एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा? रोटेशनल मोशन के कारण बस होगा. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, so velocity of separation is omega into L by 2 because this point will be moving with velocity omega into L by 2 plus vc. Very good. और इस यहाँ से ही आप अब सब कुछ क्लियर है, मतलब E भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट इजीली फ्रॉम हियर.